हमारी सोच अलग है, ख्याल अलग हैं, कहने का अंदाज अलग है, पर सुर और संगीत एक हैं। ये मानते हैं हमारे आज के मेहमान अनुज रस्तोगी। अनुज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। अनुज, आप एक प्रोड्यूसर हैं, कंपोज़र हैं, एक आर्टिस्ट हैं। इन सब रोल्स में से आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रोल आपका कौन सा लगता है? ये सब रोल्स एकदम अलग अलग स्किल सेट्स हैं। अलग अलग स्किल सेट्स की ज़रूरत है उनमें। The one role I find the most challenging is the composer, because you're bringing all of these different things together. Depending on the work that you're doing, the film that you're working on, the album, like everything, you're trying to bring out a different type of mood, a different type of feeling. And ये सब जब अलग-अलग artists मिलते हैं, trying to bring up all of that together can be quite a challenge. अनुज, आपकी शुरुआत एक म्यूज़िकल आर्टिस्ट की तौर पे हुई। ये सारे रोल्स आपने जैसे जैसे पकड़े, ये आपके पास आए, आपने इनको परस्यू किया, कैसे आप डले इन सब रोल्स में? मुझे तो हमेशा म्यूज़िक का शौक़ था। 3 साल का था, मेरी माँ जो है वो उनके पास एक लाल सा टेप रिकॉर्डर था। तो माइकल जैक्सन का म्यूज़िक वीडियो चल रहा था, तो मैं टीवी के पास गया। I think she had one of her favorite bhajan tapes in there, and I recorded right over top of that. And then I went back, we had a little keyboard at home, and then I tried to play Thriller back on the keyboard. So hamesha mujhe ek music ka shauk tha. I always had this little bit of a bug. And then even through elementary school, I used to try and make music on a keyboard. School ki plays ke liye maine music banaya. So it was always there, jazz band, concert band, all sorts of different types of music through school. और आप जो अपने म्यूज़िक के शौक की बात कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो हर एक आर्टिस्ट का अपना एक स्टाइल होता है, कोई फोक में, कोई जैज़ में, कोई इलेक्ट्रॉनिक में, पर आप काफ़ी सुंदरता से ट्रेडिशनल, क्लासिक और न्यू एज को बहुत बहुत प्यार से ब्रिज करते हैं। ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? देखिए, मैं यहाँ पे कनाडा में पैदा हुआ हूँ, तो यहाँ पे घर में भजन सुनते थे, बॉलीवुड गाने, old Hindi film songs, and then साथ साथ में rock music भी बजा, hip hop, rap, jazz. So when you live in an environment like this and you grow up around it, मेरे लिए तो music is just music. That's it. So inevitably somehow those influences come together. तो जब मैं अब music बनाता हूँ, I don't think about how do I bring all of these different things together. These are just different sort of paints, different colors in creating one piece of work. So I think it's partly upbringing and partly just growing up in an environment like this. So आपकी upbringing और environment की बात करें तो आपको किन्होंने और किन चीज़ों ने influence किया आपके career में? Well, पहले तो ये mom dad हमेशा घर में music बजाते थे. There was always music playing, whether it's bhajans or like old R.D. Burman songs, old Bollywood. And then I think just watching certain artists as I was growing up, people like Michael Jackson, it was interesting, not just as a performer but also like the way that he would go about creating music. So I had an interest in that. And then as I grew up, later in life, मुझे थोड़ा सा exposure मिल गया Indian Hindustani classical music में. One of my good friends and I, we just used to get a lot more involved with the Ragamala Society and whatnot. I'm in Edmonton where I grew up. And धीरे धीरे interest बढ़ता गया, and next thing I knew I was just all of these different types of music were around me, and I just wanted to kind of bring that out in what I was doing. और अगर हम बात करें आपके record label की OMNI, उसको तकरीबन establish हुए अब 10 साल हो चुके हैं। So जहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी और जहाँ आज आप हैं और उसको कहाँ ले जाना चाहते हैं, क्या रहा आपका सफ़र? So, yeah, OMNI Records, I started in 2002 with the goal of being able to release my own music independently, but also working with other artists. It's the goal is really to give a platform for music like this, music jo thoda sa hat ke hota hai, and give a voice to artists like myself and others who are trying to bridge in some ways different styles of music. तो ये अभी जो सुरखाब की रिलीज़ है, ये चौथी रिलीज़ है label पे, and so far I'm very thankful for all the fortune I've had. जैसे आपने अभी सुरखाब का मेंशन किया, ये आप इस नई फीचर फिल्म के लिए आपने बैकग्राउंड स्कोर दिया है, गाने भी दिए हैं। क्या इंस्पिरेशन रही सुरखाब के लिए और कैसे आपने इस एल्बम को प्रोड्यूस किया और इसके लिए गाने लिखने के लिए क्या इंस्पिरेशन रही आपकी?
तो ये एल्बम जो है ये शायद इस ऑडियंस के लिए थोड़ा सा अलग किस्म की बात होगी। हमारी हिंदी फिल्मों में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अटेंशन दिया जाता है गानों को। When people think about music in Bollywood songs, it's always the song. लेकिन 3 घंटे की मूवी है, पूरी मूवी में अगर म्यूज़िक नहीं हो तो वो जो इमोशनल रिस्पॉन्स होता है ऑडियंस का वो होएगा ही नहीं। So the idea of the background score, which is well known and understood, in the Western world and in other types of cinema, I think हमारी audience जो है वो they're only just starting to wake up to it. So Surkhab, this particular release is actually the full background score of the film. So it's about a 100-minute film, brilliantly acted by the actress Barka Madan and Sumit Suri. It's directed by Sanjay Talreja, and the great team that kind of came together to tell the story of this woman, jo in some tough circumstances, Punjab se nikal ke yahan pe Canada mein aati hai, and she falls into some troubles, and she falls into this cat and mouse chase. तो उसकी ये journey है, ये जो जिन समस्याओं से वो गुजरती है, trying to tell that story through music while the plot is playing out. So most of the music that's on this album is actually that score. अनुज, आप अपने आप को आज से 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद कहाँ देखते हैं? Just looking forward to creating more music, more film work, more albums, and you're making a difference in even a few people's lives. Thank you for talking with us, Anuj. अनुज के आने वाले प्रोजेक्ट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी मुलाकात पसंद आई होगी। क्या बात है टीवी के लिए मैं रत्ना पर्दा।